Am I right? Mm, nice. And drops, drops, YouTube channel continue. Okay. Stream live, no stuffing. Use and start. Okay. इसको बंद करते हैं एंड लॉगिन कर लेते हैं फिर मिनट sudo clear and हमारा यहाँ पर बोल लेते हैं SSRF advanced techniques proxy server change to disable try again यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट्स फिगर से देख लेते हैं SSRF और फिर थोड़ी लैब्स करने की कोशिश करते हैं तो SSRF की फुल फॉर्म है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी इज अ वेब security vulnerability that allow an attacker to force server-side application to make requests to an unintended location. In typical SSRF attack, the attacker might force the server to make connection to internal service in the organization infrastructure. Okay. Impacts वगैरह भी कुछ पता है तो SSRF attacks के चलते SSRF attacks against the server. In this attack against the server, the attacker calls the application to make HTTP requests back to the server using the hosting the application via its loopback interface. This typically involves supplying a URL with hostname like 127.2.2.1 or a local host. For example, imagine a shopping application that lets its user view whether an item is in stock, particular store. To provide the stock information, the application must query various backend reset APIs. It does this by bypassing URL to relevant backend API endpoint via frontend HTTP request. When a user beeps a stock status for an item, this browser makes the following request. ओके यहाँ पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करी प्रोडक्ट स्टॉक पर HTTP वर्जन कंटेंट टाइप हमारा है एप्लीकेशन और यूआरएल फॉर्म इंपोर्ट कंटेंट लेंथ वही 118 और स्टॉक एपीआई पे हमारा यूआरएल आ गया जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे डेटा की अब यहाँ पे अगर स्टॉक एपीआई पे लोकल होस्ट हो गया तो वो एडमिन पे भेजेगा ओके तो ट्राई करते हैं इसको एक्सेस मैं यहाँ पे वर्क स्वीट फुल लेता हूँ अपना cd slash opd and वर्क स्वीट sudo java jar and इसको लोड होने देते हैं नेक्स्ट स्टार्ट
और इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर चलते हैं। दो ओपन नहीं, एक ही ओपन है। नाइस। इसको फुल स्क्रीन करते हैं। और टारगेट प्रॉक्सी पे चलते हैं और एचटीटीपी हिस्ट्री पे चलते हैं। और सबसे पहले तो हमारी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दिस लैब्स This lab has a stock check feature which stock fetches data from an internal system. To solve the lab change, stock check URL to admin interface and delete the user file also. Okay? क्या हमें क्रेडेंस क्रेडेंस मिलेंगे लॉगिन के लिए? तो व्यू डिटेल्स कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं वर्कस्विट की प्रोक्सी ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये सब रिकॉर्ड होता रहे। लंदन के बाद पेरिस चेक करते हैं। स्टॉक चेक स्टॉक चेक ओके। ये ट्विटर पे भेज देते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं। इसको हटा के हमें कौन सा यूआरएल था हमारा? लोकल होस्ट एडमिन कॉपी पेस्ट सेंड 200। सर्च करते हैं कार्लोस एडमिन एंड स्लैश डिलीट यूजर कार्लोस सेंड 302 नॉट फाउंड। लैब हो जानी चाहिए सॉल्व। और लैब हो गई सॉल्व। नाइस। यहाँ पे जाके सब क्लियर कर लेते हैं। विंडोज ए एंड क्लियर कर लेते हैं हिस्ट्री हमारी। और यहाँ पर हटाते हैं इसको। राइट, तो हमने यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट करी जिससे हमने फेच कर दिया लोकल होस्ट एडमिन। और फिर एडमिन के आगे हमने हमने हमारी डिलीट कमांड ली थी जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट हो गई। ये लैब हमारी हो चुकी है सॉल्व। Why do application behave this way? An implicit trust request that came from the local machine. This can arise from various reasons. The access control check might be implemented in a different component that sits in front of the application server. When a connection is made back to the server, the check is bypassed. Okay. The disaster recovery purpose. The application might allow administrative access without logging in to any user coming from local machine. This provides a way for an administrator to recover the system if they lose their credit, if they lose their credential. This assumes that only a fully trusted user would come directly from the server. Okay, the administrator interface might listen on a different port number to the main application and might not be reachable directly by the user. Okay. SSRF against other backend systems. In some cases, the application server is able to interact with backend systems that are not directly reachable by user. These systems often have non-routable private IP addresses. Thus, backend systems are normally protected by the network topology, so they often have a weaker security posture. ओके, तो ये कह रहा है कि हमारा जो है एप्लीकेशन को सर्वर बहुत बार नहीं, वो हमारा डायरेक्टली यूजर्स के साथ रीचेबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो सिस्टम है इनके पास नॉन रूटेबल प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। और यूजली ये जो प्रोटेक्टेड होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी से, सो दे ऑफ्टन हैव अ वीकर सिक्योरिटी, को उनके पास एक वीकर सिक्योरिटी पोस्चर होता है। In many cases, internal backend system contains sensitive functionality that can be accessed without authentication by anyone. तो बहुत सारे केसेस में इंटरनल बैकएंड सिस्टम में सेंसिटिव फंक्शनैलिटीज होती हैं जो कि एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन के एनीवन से जो इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ। जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल में, इमेजिन देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस ऑन द बैकएंड यूआरएल।
इमेजिन करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस है बैकएंड यूआरएल पे, जैसे कि ये जो ये यूआरएल है हमारी, एक प्राइवेट आईपीएस हो, कोई भी बाहर का यूजर इसको रीच नहीं कर सकता, पर जो हमारा बेसिकली सर्वर है वो भी इंटरनल है, इसलिए वो इसको रीच कर सकता है। An attacker can submit the following request to exploit SSRF vulnerability and access administrative interface। तो वही मैं कहता था कि स्टॉक एपीआई जो है हमारी, ये जो नॉर्मल यूजर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट आईपी है हमारी, ये पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं हो सकती, हमें एक प्राइवेट आईपी के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो हमारा जो ऑलरेडी सर्वर है वो इसके अंदर है, तो इसलिए ये हमारा इसको एक्सेस कर सकता है, और अगर इस पे ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई तो ये डायरेक्टली हमारा एक्सेसिबल है। ये लैब ट्राई करते हैं। एक्सेस, सबसे पहले पढ़ते हैं मेरा ये कौन है क्या। ओके, मेरे को उसको हटाना पड़ेगा दोबारा। क्लियर कर लेते हैं। गुड। बेसिक एसआरएफ अगेंस्ट अनदर बैकएंड सिस्टम। This lab is a stock check feature that which checks data from internal system. To solve the lab, use stock check function to scan internal range from an admin interface on port 8080. Then use it to delete firewalls. ओके, सो ट्रिकी हो सकता है थोड़ा, देखते हैं कि क्या आइडिया आता है दिमाग में इसको करते हुए। सबसे पहले तो व्यू डिटेल कर लेते हैं, एंड यहाँ पे दो वर्कशीट ऑन करके चेक स्टॉप कर लेते हैं। रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए, आ चुकी है रिक्वेस्ट हमारी। इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस हो सकते हैं, तो मैं दोनों ही चेक कर लेता हूँ एक बार रिपीटर में भेज के पहले। तो मेरे को पहले तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो मैं इस पे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा वो अगर आईपी हमारी नहीं है तो क्या आएगा, उस पे रिस्पॉन्स क्या आएगा। सबसे पहले ये चेक करते हैं, इसको हटाकर वेबसाइट का बिहेवियर चेक करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे बोला गया है हमें कि इसके आगे एक और है, HTTP। अगर मैं .1 कर दूं सबसे पहले, और अगर सेंड करूं फिर इनवैलिड यूआरएल और पोर्ट 8080, राइट, और पोर्ट 8080। अगर अब मैं इसको सेंड करूं फिर, ओके इनवैलिड आ रहा है। अगर मैं 2 कर दूं फिर, ओके स्टिल इनवैलिड आ रहा है। ओके, तो इनवैलिड ही आएगा कि मैंने यहाँ पे STTP कर रखा है, इसलिए आ रहा है। ठीक, STTP करना है। ओके, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है हमारा, जो कि क्या कह रहा है, एक बार एरर पढ़ लेते हैं। कुड नॉट कनेक्ट टू एक्सटर्नल, ओके। अगर मैं इसको 3 की जगह अपना 1 कर दूं, 3 की जगह में इसको अगर 2 करूं, स्टिल सेम एरर आना चाहिए। अगर मैं इसको 1 कर दूं, स्टिल मिसिंग पैरामीटर। ओके, अगर मैं इसको 5 कर दूं, ओके इसको एक काम करते हैं, फिर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाता हूँ। ये यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हमारा भेज देते हैं इंक्लूडर में, और इसको 0 कर देते हैं। और सबसे पहले क्लियर, और इसको ऐड कर लेते हैं, सिंपल लिस्ट। 5 6 7 8 9, यहाँ फिर ऑब्वियसली 0 होगा। इनमें से एक नंबर होना चाहिए, और इसको स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्स रिसीव,
रिस्पॉन्स इंटरनल सर्वर एरर 500। ओके, इस पे 400 मिसिंग पैरामीटर, बाकी सब पे 500 है। इस पे हमारा क्यों नहीं किया? ओके, एक बार दोबारा रीड करती हूँ। तो अगर मैं इस पे पोर्ट 1 पर इस साइड रिपीटर पे जाऊँ और पोर्ट 1 पे सेंड करूँ तो हमारा आना चाहिए। और अगर मैं इसको स्लैश या तो यहाँ पे एड में ना करना, तो यहाँ पे एड आना चाहिए। एडमिन सेंड could not connect to external, उसलिए इसको सेंड करते हैं दोबारा हमारे इंक्लूडर से। बस बस बस। और इसको सेंड करते हैं दोबारा हमारे इंक्लूडर पर। और यहाँ पे इंक्लूडर पे मैं इस बार यहाँ पे 1 पे इसको कर दूंगा दोबारा 0 और लगा दूंगा इस पे ऐड, तो वहाँ पे नहीं लगना। शिफ्ट, अब ऐड होगा हमारा ये कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्टार्ट करते हैं। ओके, सब में 500 एरर है। रिस्पॉन्स पॉइंट्स could not connect to external। ओके, सब में सेम एरर है, इसका देख लेते हैं 0 वाले का। ओके, इसको करते हैं डिस्कार्ड, दोबारा चलते हैं इस पे। और उसके और पेज वो भी यहाँ पे इसको सर्च करते हैं एक्सेस फाइल, और अब सर्च करते हैं इसको। कोड स्कैनिंग मेरा, इस पे देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। इसका
When an internal network, DNS records, internal operation can data verification, targeting one to such one server or verification agreed on in the register. SSRF man, or cleaner data solution, se non la devono guardare di nuovo. E che admin send one send 400 missing parameter. हम क्या पैरामीटर मिसिंग कर रहे हैं यहाँ पे होना तो यही चाहिए पर इसका पैरामीटर क्या मिसिंग कर रहे हैं सारे इसका एडमिन and send it to both intruder change stop API to admin. Exit my terminal exit happening. So I will see any once ls the cheat sheet that I have line data to for dot singularity experience ls यहाँ पे देखते हैं A to Z है पर हमारे पास 1255 नहीं है पर मुझे ब्रेक कर लेते हैं कितने आते देखते हैं ये से मुझे कल चलते हैं नेक्स्ट है नेम ऑफ सीलिंग और A I is 0 if I is less than let's say 256 I plus then F string B versus 5 then U9 ओके हमारे सारे आ चुके हैं फ्रॉम 0 to
255 और यहाँ पे हम करते हैं 3D डॉट स्लैश 3 क्लियर नैनो 1 4 5 30 P control shift B. Okay, control 4. Yes, and exit. Then let's take it one from here and let's send it to intruder. Intruder. We already have this. Remove. Remove. Clear. Load. Cheat sheet 1225.txt and start the attack. इसको बोले देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टेटस कोड जाके हमारे 260 इसको कॉपी करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे रिपीटर पे जाएंगे और सेंड कर देंगे 200 आ गया ये रहा फाइलोस कंट्रोल जी और इसको कर देंगे डिलीट और हमारी लैब सॉल्व हो जानी चाहिए लैब सॉल्व हो गई circulating common CSRF SSRF defenses. It is common to see application containing SSRF behavior together with defense aiming at preventing malicious exploitation. Often, these defenses can be communicated CSRF with black, SSRF with blacklisted input filter. Some applications block input containing hostname like 127.0.0.1 and localhost or sensitive URL like /admin. In this situation, you can often circumvent using the following technique. Use an alternative representation such as for 127.1. Register your own domain that resolved to. You can use spoof.workflow.net for this purpose. Obfuscate block string using URL encoding or keys variation. Provide URL that you control, which redirect to the target URL. We try different redirect code as with ओके इसको करते हैं प्रैक्टिस यहाँ वाले पे हम करेंगे लैब को एक्सेस डिसेबल है हमारी ठीक है इसको एग्जिट कर देते हैं इनको भी एग्जिट कर देते हैं प्रोक्सी भी हम डिलीट कर देंगे लाइव मेरी सही चल रही है लाइव 429 मिनट्स हो गए ओके यहाँ पे चलते हैं यह हमारी लोड हो चुकी है this lab replacement straight from kernel system so this lab changes stock check you to access the admin interface at admin and delete the user files to develop to NT to weak anti-SSRF defense that you need to bypass all right यहाँ पर चलते हैं इस पे चलते हैं अपना वर्कस्वीट चेक डिसेबल फेच किया कर लिया रिपीटर पे चला गया इसको हटाओ और यहाँ पे जाकर सेट करते हैं
127.3.2.1 send send not for security reason. 127.1 127.1 okay solutions the product 120 encoders URL 27.1 चेक करते कि ये चलेगा हमारा ट्विटर पे ओके कॉपी देगा डिकोडर कंट्रोल पी कॉपी रिपीटर सेंड ओके स्टिल ब्लॉक ओके इसकी वजह से ब्लॉक हुआ हुआ है यहाँ पर ये लगा चाहिए हम आज के लिए काम की है स्टिल ब्लॉक ओके can use alternative IP recognition and else मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दूँ और स्लैश एडमिन को अगर मैं इंपोर्ट कर दूँ दोबारा में अगर मैं स्लैश एडमिन को दोबारा इंपोर्ट कर दूँ एडमिन को तो मैं सेंड करूँ तो फिर डॉट नेट फॉर दिस पर्पस इसको कॉपी कर सकते हैं obfuscate block strings using or input और case variation कि मैं थ्री एम आई कर दूँ तो और अगर मैं इसको कर दूँ 127 डॉट वन और अगर अच्छे एकदम ओके हमारा हो गया ये पर मेरे को एक और चीज देखनी है अगर मैं इसको क्या करूँ कि अगर मैं इसको क्या से कर लूँ कॉपी करूँ इंक्लूडर पे एक मीटर पे जाऊँ और अब सेंड करो फिर स्टिल ओके सेंड करते स्लैश अपना यहाँ पे आ गया डिलीट फाइलों लैब बोला ये चाहिए सॉल्व लैब हो गई है सॉल्व बैक चल के ऐसे सारे फिर वाइट लिस्ट बेस्ड इनपुट फिल्टर some application only allow input that matches a wide list of permitted values. This filter may look for a match at beginning of the input or contained within it. You may be able to bypass this filter, exploiting inconsistency in URL phrasing. The URL specification contains a number of features that are likely to be overlooked when URLs is implemented. Ad hoc phrasing and validation using this method. You can make credentials in URL before the host name using @ for example
expected host fake password. You can use hashtag character to indicate a URL fragment. For example, even host. You can leverage the DNS claiming hierarchy to place required input into a fully qualified DNS name that you control. ओके करने का ट्राई करते हैं। हुआ तो ठीक है वरना देखेंगे। या मेरा ये इसमें है नहीं है। ओके एक्सेस करते हैं लैब। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको लोड होने देता हूँ। व्यू करते हैं और प्रोक्सी अपनी ऑन कर लेते हैं। चेक कर लेता हूँ डिसेबल और इसको रिपीटर पे भेज देता हूँ। सेंड 200 ओके। एच सबसे पहले अपना एरर ले लेते हैं विच इज लोकल होस्ट। एडमिन पे एरर आना चाहिए। सेंड करते हैं मस्ट बी स्टॉप डॉट होस्ट नेम मस्ट बी http लोकल होस्ट स्लैश एडमिन। यहाँ से देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। https expected host with password @email host. You can use hashtag to indicate email host and hashtag expected host. Okay. Then hashtag send then your favorite send okay. Immediately local host admin file host you can leverage DNS expected host then dot email host। इसको दोबारा सेव करते हैं रिपीटर पर expected host dot local host एडमिन अगर मैं करूँ वहाँ पे तो क्या होगा। ओके 200 ओके आ रहा है। then what if मैं अगर करूँ http local host admin hashtag ओके स्टिल नहीं हुआ। You can URL encode character to confuse URL phrasing, particularly useful in case that handles URL encoded character differently than encoded perform. You can try double encoding characters on servers they receive. Solution
Change the stock API parameter and observe that it is using URL. So stock API parameter to let's see, say, you observe that it is using website hosting materials. Change the URL to internet server error. Okay, the hashtag identify HTTP username at the rate वहां पर देखते हैं क्या है कोड स्कैनिंग AWS submit the update payload look for responses common attacks and data exposure reconnaissance code scanning DOS RCE backend SSRS mitigations response handling it's how to test SSRF advanced speed shift people prevention change evaluation bypass employee.com attacker hostname allowed hostname okay our allowed hostname is http localhost saying must be store कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और वेब अटैक hostname है हमारा लोकल होस्ट
local host slash admin admin encoding intruder कॉपी करते हैं कीबोर्ड पर nano ssrf dot txt control shift v control to yes exit इसको करते हैं इंट्रूडर परसेंट इंट्रूडर से हम क्या करेंगे इसको कर देंगे ऐड यहाँ पे हो जाएगा ऐड और यहाँ पर हम लोड करेंगे SSRF और इसको स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है ओके सब में 400 है इसका रिस्पॉन्स देखते हैं which is could not connect और बाकी सब का है 500 500 एंड सेम बाकी सब का है हमारा 400 ओके इसको हटाते हैं डिस्कार्ड रिपीटर and observe URL check stock intercept the request send it to repeater change the URL in stock API to external stock and observe that the application is praising URL extracting hostname against a whitelist proxy proxy chat stop and यहाँ पर डिसेबल करते हैं इसको यहाँ पे चलते हैं रिपीटर पर भेजते हैं send still same error okay
कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं इंटरनल सर्वर एरर append a hashtag to the username and a hashtag a community solutions में देखते हैं Hi everyone, welcome back to another video in the Web Security Academy series. At localhost and then delete the user Carlos. Alright, let's make this proxy to send requests to burp, and then that tells us that the external stock check host must be stock dot name over here. Similarly, we can do 127.1, which resolves to the localhost IP address. And we can also use the decimal encoded version or the octal representation for localhost. So we have to get a little bit creative in a way that we could still insert our localhost IP address and trick the application in order to parse it instead of parsing the application's hostname. So if we go back, again, let's URL decode this, Control-Shift-U. Let's remove everything from over here and just add, let's say, username at stock.weliketoshop.net. So applications usually support this format in the form of being able to add credentials, and the credentials would be added before the @ sign. So it might be possible that this application supports that format as well. Let's hit send. And it says could not connect to external stock check service. That's interesting. So we're getting another error. Let's put a # sign to see if this is accepted. Hit send. And over here it says external stock check host must be stock.weliketoshop.net. All right. So although we do have stock.weliketoshop.net in our parameter, it still gives us an error as if it's trying to get an external system. And what that indicates to me is that it's viewing this as the URL instead of this. And that does happen depending on the URL parser that the application is using. And if you've never seen this before, it might seem a little bit odd, but depending on the language that you're using and the different URL parsers in the language that you're using, they might parse a string differently in order to find the URL. So what's likely happening over here is that the parser that this application is using is parsing this part first, and anything that comes after this part is automatically considered as a URL, and then whatever how URL अगर hashtag यहाँ सेंड करें post and admit double recorder hashtag and include as URL SN23 %23 include as URL editor and
Ability to connect it to user infra accessing. Send 302.com snapshot. तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लोकल होस्ट लिया। ओके, हमने सबसे पहले यूआरएल इनकोड करा, हैश इसको यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे अपना ओडी दिया यूआरएल, फिर यहाँ पे एलिमेंट, फिर डिलीट कर दिया। एक बार दोबारा चेक करते हैं। चीज यूआरएल टू the rate and observe that the accepted, indicating that URL filter supports every correct credentials. Append a hashtag to the username and observe that the URL is now rejected. Double encode the hashtag to %2523 and observe that extremely suspicious. Advanced response indicating server may have attempted to connect to the internet to access payment interface. Localhost chat GPT explain this to me. यूआरएल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये। यूआरएल स्कीमा हो गया, यूआरएल इन्फो एट द रेट होस्ट पोर्ट पाथ क्वेरी फ्रेगमेंट। स्कीमा हो गया एचटीटीपी यूजर इन्फो बिफोर एट द रेट। होस्ट हो गया डोमेन आईपी आफ्टर एट द रेट। पोर्ट ऑप्शनल, पाथ क्वेरी और फ्रेगमेंट। व्हाट हैपनिंग हियर? लोकल होस्ट 80% is replaced before the at the rate, which means it's treated as the info. Normally user pass at the rate host, but here it's just a weird string. %25 encoded, when 0.23, which is fragment indicator. This means that we click the server book line thinking that real host is stop, or the real username is localhost 80. Someone coldly written filters only look at the beginning of the URL. And when you are targeting localhost, because of header in the real request goes to from the URL, the fragment copy will be enough. It looks like it's just going to localhost. Okay. इसको क्लोज करते हैं। bypassing SSRF filters via open redirection. It is sometimes possible to bypass filter defense by exploiting an open direction vulnerability, redirection vulnerability. In previous example, imagine user submitting URL is strictly validated to prevent malicious exploitation of the SSRF behavior. However, the application whose URL are allowed to contain an open redirection vulnerability provides the API to make the backend HTTP request, supports redirection. You can construct a URL that satisfies the filter and result in a redirected request to the desired backend target. For example, the application contains an open redirection vulnerability in which the following URL: production, next product, question mark current product, and path. Okay, you can leverage open redirection vulnerability to bypass user URL filter and exploit SSRF. एक्सेस करते हैं इसको, यहाँ पर हटाते हैं, प्रॉक्सी करते हैं, रीड रिपीटर पे चलते हैं, प्रॉक्सी हिस्ट्री बैक,
चेक करते हैं यूआरएल। चेक स्टॉप करके हम डिसेबल करेंगे प्रॉक्सी। इसको क्रॉस करते हैं, उसको भेजते हैं रिपीटर में। रियल आईडी 1। कॉपी। एंड पाथ। एंड पाथ इज इक्वल टू current product 6। कॉपी करते हैं स्टोर यहाँ पर। पेस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट आईडी 1। 1 and missing parameter, control C, save, control C, control Z, product ID 1, store ID 1, product ID 1, save, then product ID 1, path is equal to HTTP 192.168.0.12.8080 admin, apply changes, send 781, इस पाथ को हटाते हैं। ID 1, path, enter, disable, proceed, ओके क्या कंपेटिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे दूंगा
रिपीटर पे चलते हैं। और my first validating supply stock equivalence from along domain, which it is the next supply you are in this guys. With the open redirection, forward redirection, make request of attacker stories from API and not like URL हो गया। और फिर अपना 5 हो गया। इसको क्रॉस करके रिपीटर में भेजते हैं। इस पूरे को कॉपी करके अगर मैं इस पूरे को पेस्ट कर दूं सेंड करूं डिकोडर डिकोड URL कॉपी रिपीटर पेस्ट सेंड already one and send ये स्टिल बेसिक पैरामीटर ये आ रहा है यहाँ पे और डिकोडर से चल के इसको कॉपी कर लेते हैं रिपीटर का सॉफ्टवेयर स्लैश पर से पहले पहले इसको पेस्ट करके सेंड करते हैं इसको प्रोसेस कर रहा है pointing to this very common server-side image quality एक बार यहाँ का सॉल्यूशन अगर देखें ये एंड तक लगाना चाहिए सेंड करें ये सेम रिजल्ट है हमारा creative world that exploit open redirect vulnerability and redirects to are equal to admin observed as dot redirection showed to the admin page r is equal to slash product next product is equal to ये फाइल हटाया जाए and store and like send missing parameter again next product click on next product and observe the file
parameter is placed into the location header of redirection response. Next product. ये हमारा हो गया पहले वाला प्रोडक्ट आईडी 2। एक काम करते हैं, कंट्रोल पे करते हैं, हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर जाकर दोबारा वर्क स्वीट ओपन करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट लोड होने देंगे। अब इसको हम सेंड करेंगे रिपीटर में, गेट। अगर यहाँ पे 5 होते हैं, 5 इज इक्वल टू सेंड प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट 2 और पाथ होगा इसका ये 80 ओके। लोकेशन ये भी नहीं है, displays into location header of a redirector response resulting in open redirection. Reference product ID 2 302 error question mark. Two. Three, two, and five. Next product. Question mark 5 is equal to इसको हटाई दो, रोक सीधे चलते हैं और दोबारा भेजते हैं। Product ID is equal to 3. Next product. 302 not found error हो गया। Product is equal to
Okay, then. Do you want it? Hi everyone. Meantime, open up Burp Suite Professional. So I'm using the professional version of so it's using the path to the feature that it wants to visit. So in this case, it's product/stock product. That's not necessary in order. All right, let's set our browser to send requests to Burp and tabs. So send to repeater. But notice over here, so first let's forward. And then notice over here, there's also a next product. So let's click on that and send this to a repeater as well. That's a new functionality that we didn't see in previous labs. So let's forward it one more time and set intercept to off. Now go back to repeater and let's name our tabs. So this was the check stock feature and this was the next product feature. All right, let's test the check stock feature first. So let's do Control-Shift-U to URL decode it. And it's not using a URL, so that's interesting. It's using the path to the application. So it's using the path to the feature that it wants to visit. So in this case, it's product/stock/check product ID is equal to 1. And then when you hit send, it says missing parameter because it's not URL encoded. So if you do Control-Shift-U, or Control-U to URL encode it, it gives you the number of items that are available for this product. Okay, so if we give it, let's say HTTP localhost, it's likely not going to work because what's going to happen, it's going to append this to the URL of the system that is used in order to check items, which we've seen it in previous labs. It was something like I like to shop.net. So if we hit send, it says invalid external stock check URL and invalid URL. So this doesn't work. Let's go back. What we're going to do is we need to become creative and try to exploit this vulnerability without having to put in a URL over here, at least not directly. So if we look at next product over here, notice that there's a path variable that if you hit send, what it's going to do, it's going to redirect you to this path in the application. So if we follow redirection, notice over here, it got you to the page product where the product ID is equal to 2. So this is redirecting you to a different location in the application. Let's see if it's vulnerable to an open redirect vulnerability. That's a vulnerability where the application will redirect you to an arbitrary URL. So let's say HTTPS. Okay, we get a 302. That's a good sign. And if we render over here, vulnerability, and we're going to use that in order to exploit the SSRF vulnerability in the check stock feature. All right, so the way to do that is instead of have /product/stock/check and then the product ID, what we're going to do is remove this over here and go back to next product and add this path. Now this should be accepted by the system because this is a valid path in the application. So let's copy it and paste it in here. However, instead of the path being /product, where the product ID is equal to 2, what we're going to do is we're going to add the path to the internal system that has the admin interface. So it's HTTP. What we would do is fuzz the application with all the possible IP addresses of the application in order to find valid directory in this lab over here. Instead, to happen over here is that the application is first going to validate that the supplied stock API URL is an allowed domain, which it is because, it's coming from /product/next product. And then the application will request the supplied URL, which triggers the open redirect vulnerability
from the path variable, it follows the redirection and makes the request to the internal URL of the attacker's choosing. And so this way you bypass the defenses that were put for SSRF and exploited the vulnerability. So if we hit send, we should see the admin page and we see a missing parameter path. So what we're going to do is URL encode this. So Control U to URL encode it, hit send. And here we go. We get a 200 response. If we render, we're at the admin page. So I'm just going to copy this right over here and add it in here. So admin page /admin. And then the next thing we want to do is delete the user. So delete user. We're going to go back here, go to raw, and click on and find the user Carlos. And here's the path to delete the user. So it's HTTP 190. सो यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले सारा क्लियर कर रहा हूँ मैं दोबारा। यस, एंड यहाँ पे चलते हैं वर्कस्वीट। ये मैंने गलती से माय अकाउंट पे क्लिक किया। सबसे पहले चेक प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, गुड, डिसेबल, माय प्रोडक्ट स्टॉक। ये बेसिक वर्क से पीछे ला देगा, इसको रिपीटर में घुसते हैं, इसको करते हैं चेक प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये सो यहाँ 5 पे हम करेंगे पाथ इज इक्वल टू हमारा पाथ टू ये सेंड रिडायरेक्शन फॉलो नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, ओनली कंट्रोल यू, सेंड, ये रहा हमारा फाइलोस एंड कॉपी, सेंड 302 और लैब सॉल्व हो गई है हमारी। नाइस। आगे हमारा ब्लाइंड एसएस आ रहा है लास्ट, इसको भी देख लेते हैं। blind SSRF vulnerability occur if you cause an attack application to issue a backend HTTP request to a supplied URL, but the response from backend is not returned in application front-end response. Blind SSRF is harder to exploit, but sometimes lead to successful remote code execution on the server or other backend components.
finding hidden attack surface for SSRF. Many server-side requests for vulnerability are easy to find because the application normal traffic involves request parameter containing full URLs. Other example of SSRF are harder to locate. Partial URLs in request. Sometimes an application places only a hostname or part of a URL path into request parameter. The value submitted is incomplete. Copied server side into a full URL that is requested. If the value is readily recognized as a hostname or URL path, the potential attack surface might be obvious. However, exploitability as full SSRF might be limited because you do not control the entire URL that gets returned. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक एप्लीकेशन प्लेस करती है ओनली अ पार्ट ऑफ अ होस्ट, ओनली एक होस्ट नेम यहाँ पे एक यूआरएल का पार्ट रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर। तो जो वैल्यू है सबमिटेड है वो इनकॉर्पोरेटेड है सर्वर साइड फुल यूआरएल में जो रजिस्टर है, जो कि रिक्वेस्टेड है। अगर यूआरएल जो है रेडली रिकॉग्नाइज हो जाता है एज अ होस्ट नेम या यूआरएल पाथ, तो पोटेंशियल सर्विस जो है वो ऑब्वियस है। डेटा फॉर्मेट एंड लाइन एसएसआरएफ एसएसआरएफ आई थिंक इतना बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही।